Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. Today's topic is rural administration. Learning topics: a quarrel in a village, the police station, maintenance of records in a village, a new Hindu law, Hindu Succession Amendment Act 2005. We live together in a society or a community and interact with each other. However, when people of different thinking, religions, castes, languages and races come together, there are always chances of conflicts and disagreement. It may disturb the law and order. तो आपकी जो कंट्री है, अलग अलग टाइप के रिलीजन है, हर चीज़ है, सब लोग शांति से रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब इतने ज़्यादा अलग अलग कैटेगरी के लोग रहेंगे तो वहाँ पे लड़ाई होना स्वाभाविक है. A quarrel in a village. Ramnath lives in a small village called Kishanpur with his wife, a son and 2 daughters. He owns about 3 acres of land. He had mortgaged about an acre of his land to the local money lender, Seth Karodimal, when he sent his only son to the city to pursue higher education. His son Neelkant has finished his studies and has got a job in the city. So he took a loan from the local bank in order to pay off his father's debt and get his father's ancestral land freed from Karodimal. तो यहाँ पे जैसे आपको एक स्टोरी बताई गई है कि एक फार्मर है, एक विलेज में एक इंसान रहता है, उसने अपने एक खानदानी ज़मीन को, पुश्तैनी ज़मीन को एक सेठ के पास गिरवी रखवा दिया है. जब बेटे की जॉब लग जाती है तो वो एक बैंक से लोन लेता है ताकि वो उस पुश्तैनी जमीन को छुड़वा सके. But when Neelkant and his father reached Seth's house and offered him the money, Karodimal got furious and said that Ramnath owned him much more than the sum that Neelkant had calculated. He did not seem at all willing to give the papers of the land back to Ramnath. जब पैसे देने के लिए वापस गए तो सेठ का कहना था कि आपको इससे भी ज़्यादा पैसे देने हैं. वो वापस पेपर्स देने के लिए तैयार नहीं हुआ. Neelkant did not want to persuade Seth Karodimal anymore and asked his father to report the matter to the police. After much hesitation, Ramnath agreed, but he did not want to spoil relations with the village moneylender who had been so generous as to help him when he needed the money. So he told his son, "Let us go to the town and report the matter at the main police station, away from the prying eyes of the villagers." तो रामनाथ का कहना था कि हाँ ठीक है, हम कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेन, लेकिन किसी दूसरे टाउन में करते हैं ताकि यहाँ के लोगों को पता ना चले. But we cannot do that, father, because the case will be registered only at the local police station. Our village comes under its area of work, Neelkant explained to his father. और उनका कहना था कि यहाँ पे ही हमें रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी क्योंकि हमारा एरिया एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के अंडर लाई करता है. At the police station, they met the station house officer or the SHO who asked Neelkant to put down his complaint. The SHO told one of the constables on duty to investigate the matter. जब वो अपने लोकल पुलिस स्टेशन पहुंचे तो SHO वहाँ पे था. पहले उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा मैटर शट डाउन कर दो, लेकिन उसके बाद कांस्टेबल को भेजा उस मैटर की जांच पड़ताल करने के लिए. The police station. Each police station has to maintain law and order in the area under its control. The people of that area report cases of bulgari, accidents, quarrels, etc. to the police. The SHO is in charge of the police station and along with the police constables is responsible for investigating all such incidents and taking appropriate action. किसी भी एरिया का जो पुलिस स्टेशन होता है वो उसी एरिया की सारी रिपोर्ट्स लेता है और SHO along with his constables is responsible for taking care of the people located at that area. All cases have to be registered first. This means that the person who is reporting the incident has to register a report at the police station. Then the SHO takes up the case and starts the procedure by sending a constable to the relevant place to find out more information on any other action he may decide upon. उसके बाद SHO को लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया जाता है, कांस्टेबल को वो उस जगह पर भेजता है ताकि और इन्फॉर्मेशन मंगवाई जाए कि एक्चुअल में ऑन फील्ड क्या सिचुएशन है और उसके बाद अकॉर्डिंगली डिसीजन लिए जाते हैं. Maintenance of records in a village. You have seen how the village moneylender had no intention of giving back the ownership papers of the mortgaged land to Ramnath, despite the latter's willingness to pay off his debt. In this case, the police, when investigating the case, has to take help of the patwari. The patwari, who may be known by different names in different states, is responsible for measuring the land and maintaining and updating the records of the lands of villagers. हर एक विलेज में एक पटवारी होता है जिसके पास उस पर्टिकुलर विलेज की लैंड और लैंड ओनर्स की डिटेल
डिटेल्स होती है, जिससे कि SHOs या पुलिस स्टेशंस को एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आसानी रहती है देखने में कि कौन सा लैंड किसको बिलोंग करता है. फॉर दिस पर्पस द पटवारी प्रिपेयर्स अ मैप ऑफ द विलेज व्हिच गिव्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द ओनर ऑफ ईच प्लॉट ऑफ लैंड, इट्स साइज, वेदर इट इज रेंटेड टू सम अदर पर्सन. If it is, then that person's name and amount of rent received by the owner, the area on which crops are grown, the area which is kept fallow, the kind of crops grown, and so on. The details corresponding to the map are maintained in the records kept by the patwari. Looking at records, the patwari knows who owns the plot of land and who mortgaged it to whom. Thus, he would be able to help Ramnath. पटवारी का काम होता है उस पर्टिकुलर एरिया में, उस गांव में कितना लैंड किसके पास है, किस तरीके की एक्टिविटी उसमें हो रही है, कोई रेंट पे है या नहीं, रेंट पे अगर रह रहा है तो कौन रह रहा है, उसका नाम, क्या रेंट दे रहा है, कहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करे जा रहे हैं, किसने कौन सा लैंड किसको कहाँ पे उधार दिया है, मॉर्टगेज करा है, गिरवी रखा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पटवारी के पास होती है. ये जो नीचे आपको टेबल गिवन है ये पटवारी के ही एक रिकॉर्ड्स का example. The patwari measures the plots of land by various means, such as using long chains to measure the fields. The patwari also has the duty of collecting land revenue from the farmers. So it is necessary that his records have to be regularly updated. Farmers may change the area of crops grown on their fields or may dig a well or give a part of their plot on rent. Sometimes a farmer may buy a plot of land or divide his land among his children. All such changes have to be recorded. तो पटवारी जो होता है सारे प्लॉट्स की मेजरमेंट्स भी करता है, कौन सा प्लॉट है, कितना उसका साइज है, क्या चीज उसमें हो रही है, सारे रिकॉर्ड्स पटवारी रखता है. इवन जब कोई एक बड़ा लैंड होता है और उस घर के लोग डिसाइड करते हैं उसका बंटवारा करने के लिए बच्चों में, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी पटवारी को रिकॉर्ड करनी होती है. Supervision of Patwari. The states in India are divided into districts. These districts are further subdivided. The subdivisions are known by different names such as Tehsil, Taluk, etc. The district collector, also known as district magistrate or deputy commissioner, is an important officer from the Indian administrative service. He heads the district administration and is in charge of revenue collection of the district on behalf of the government. The district magistrate, together with revenue officers, tehsildars, supervises the work of the patwaris. They ensure that records are maintained. Besides, they settle any disputes generally at the tehsildar's office. In the tehsildar's office, land disputes are also heard. तो आपके जो इंडिया में अलग अलग सिटीज हैं वो विलेजेस में डिवाइडेड हैं, विलेजेस भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड हैं. तो डिस्ट्रिक्ट्स में आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स होते हैं जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ही ऑफिसर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे वहाँ पे टैक्स भी कलेक्ट करते हैं, और अलग अलग टाइप के जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो भी तहसीलदार के ऑफिस में रिजॉल्व करवाए जाते हैं. Farmers can obtain a copy of their land records together with the map, at times on payment of a small fee. In some states, records are being computerized and kept at the panchayat office so that they are updated faster and the farmer can obtain them easily. जो farmers की कॉपी होती है उनकी लैंड की, क्रॉप्स की या बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वो भी इनके पास अवेलेबल रहती है और कभी भी इनकी कॉपी लेने के लिए फार्मर्स उनके पास जा सकते हैं. Quick facts. A farmer may require a copy of his land's record together with the map in many situations. These are if a farmer wants to divide his property among his children, if a farmer wants to buy or sell a plot of land from to another, if a farmer wants to purchase fertilizers for his field, if a farmer wants a loan from the bank to dig a well in his land. Farmers have the right to obtain information about their records. These records are now computerized and generally kept at the panchayat office so that they are more easily available and regularly updated. People may obtain related information by paying a nominal fee for this. तो अलग अलग टाइप की कॉपीज भी मेंटेन होती हैं. अगर किसी को अपना लैंड मॉर्टगेज करवाना है, गिरवी रखवाना है, डिवाइड करना है, बेचना है, फर्टिलाइजर्स खरीदना है, तो ये सारी चीज़ें भी पंचायती ऑफिस में कंप्यूटराइज करी जाती हैं, अपडेट भी करी जाती हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन फार्मर्स को दी भी जा सकती हैं. तो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपको खुद से करनी है.